नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं जीत आज तक न्यूज 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जीत आज तक न्यूज 24/7 न्यूज चैनल। एहतियात उपाय के तौर पर शाम 6 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 15 मई 2025 की अधिसूचना के अनुसार देश के संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण और मूल्यांकन करने के लिए 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसके आधार पर देश के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। भारत सरकार के आदेश अनुसार 31 मई को शाम 6 बजे गुजरात में एक और नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन ने दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया शहर में भी मॉक ड्रिल आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त रात्रि 8 बजे से 8:15 बजे के बीच ब्लैकआउट के आरंभ में एक लंबा सारन बजाया जाएगा और समाप्ति पर एक छोटा सारन बजाया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान नव पंजीकृत स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड और अन्य कार्मिक नागरिक सुरक्षा बल में शामिल होंगे। साथ ही दुश्मन देश के किसी भी संभावित हमले का मुकाबला करने के लिए अग्रिम तैयारी के तहत जिले में यह मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला प्रशासन नागरिकों से सहयोग करने रात्रि 8 बजे सायरन बजाने पर एक साथ सभी लाइटें बंद करने और रात्रि 8:15 बजे पुनः सायरन बजाने पर भी लाइटें चालू करने का अनुरोध कर रहा है। કાલે 31 મે 2025 ના દિવસે દાહોદ જિલ્લામાં ઓપરેશન શિલ્ડ હેઠળ એક મોકડ્રીલ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। એનું આયોજન દેવગઢ બારિયા ખાતે કરવામાં આવેલ છે। એમાં ગવર્મેન્ટના જુદા જુદા વિભાગો એની સાથે સાથે સિવિલ ડિફેન્સના વોલેન્ટિયર્સ અને સામાન્ય જનતા પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે। ત્યાં સાંજે 6 વાગ્યાથી અવેરનેસ બાબતેનું જુદા જુદા પ્રકારના સિમ્યુલેશન્સ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે। એના આધારે મોક ડ્રીલ આયોજિત કરવામાં આવશે। એની પછી 8 વાગ્યાથી 8:15 સુધી એક બ્લેકઆઉટ પણ રાખવામાં આવેલ છે। તો હું દેવગઢ બારિયાની જનતાને વિનંતી કરું છું કે આ સમયગાળા દરમિયાન આપના ઘરની લાઇટો જો છે એ બંધ કરીને આ મોક ડ્રીલ યશસ્વી બનાવે। કોઈ પણ પ્રકારની ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન આવે અને તો દેશની સેનાને મદદરૂપ થવા માટે સામાન્ય નાગરિકો દ્વારા શું કરી શકાય એ બાબતેનું અવેરનેસ થવા માટે આ પ્રકારની મોક ડ્રીલ આપણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। અને યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિ થાય કે ઊભી થાય કે કોઈ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન આવે તો એમાં નાગરિકોની જવાબદારીઓ શું હોય છે, જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટની જવાબદારીઓ શું હોય છે, કઈ પ્રકારે આપણને ઓપરેટ કરવું પડે, કઈ પ્રકારે એકબીજાને સાથ સહકાર આપવું પડે અને सामान्य मानसों जिंदगी बचावવાનું હોય કે जनता प्रॉपर्टी હોય કે। आज की ताजा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।